Hello everyone, welcome to UPSC Digital Library. Welcome to the complete course on Physical Geography. फिजिकल ज्योग्राफी के कंप्लीट कोर्स में आप सभी का स्वागत है. वी आर बैक आफ्टर अ ब्रेक एंड इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रॉक साइकिल. इस चैप्टर में हम रॉक साइकिल के बारे में बात करेंगे. Obviously, during your school times, you all must have studied about igneous rock, metamorphous rock, and sedimentary rock. But what exactly are they? How one of the rock gets converted to the other form, we are going to discuss in this chapter. इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि ये जो तीन तरह के रॉक्स होते हैं, इग्नियस, मेटामॉर्फिस और सेडिमेंट्री, ये कैसे एक से दूसरे फॉर्म में चेंज होते हैं. तो आइए इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं. All right. Before we proceed further, let me tell you upfrontly that the igneous rocks are primary rocks. I will tell you why. जो igneous rocks होते हैं वो primary rocks होते हैं. And the other two forms of rocks, sedimentary and metamorphous, these are known as secondary rocks. Now you guys might be thinking, why is it so? ऐसा क्यों है कि igneous primary rocks हैं और सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिस रॉक्स सेकेंडरी रॉक्स हैं? इट इज बिकॉज इग्नियस रॉक्स ही सबसे पहले फॉर्म होते हैं और उसके कन्वर्जन के बाद ही या तो सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म होंगे या मेटामॉर्फिस रॉक्स फॉर्म होंगे. हमारे अर्थ के अंदर जो मॉल्टन मैग्मा है, या तो वो अर्थ के सरफेस पर आ जाए और सॉलिडिफाई हो जाए, तब भी वो इग्नियस रॉक बनेगा, या वो अर्थ के अंदर ही सॉलिडिफाई हो जाए तो भी वो इग्नियस रॉक बनेगा. आइदर द मैग्मा comes out of the surface in the form of lava and solidify, then also it will be termed as igneous rock. Whereas if it solidifies within the earth's surface, then also it will be termed as igneous rock. And whereas these sedimentary and metamorphous rocks will be formed from the igneous rock, and hence as the igneous rocks are the first one to be formed, they are known as primary rocks. क्योंकि igneous rocks सबसे पहले बनते हैं इसलिए उनको प्राइमरी रॉक्स कहते हैं, और उनके वेदरिंग इरोजन के बाद सेडिमेंट्री रॉक्स बनेंगे, और जब उनका फॉर्म इमेंस टेम्परेचर और प्रेशर में चेंज होगा तब वो मेटामॉर्फिस रॉक्स बनते हैं. वन बाय वन we will pick up all these three rocks and we'll discuss them, and also we will discuss a few questions which are important from UPSC prelims point of view also. So it is the same thing that I had discussed before, that these are the primary rocks, igneous rocks. So when weathering and erosion will take place, they will get converted into sediments. Sir, what is this weathering and erosion? We do not know. Don't worry, I will explain you that. Now after that, when they will be compacted and cemented, they will form sedimentary rocks. In the same way, just how when the magma cooled and solidified, it became igneous rock, in the same way when the igneous rock will melt and it will undergo changes in terms of pressure and it will undergo enormous heat, then it will get converted into metamorphous rock. I hope this point is clear. So now one by one, let us pick up these three rocks. First of all, let us pick the igneous rock, which are also known as the primary rocks. So the term igneous has come from the Latin word ignis, which means fire. Obviously, these are formed from the molten magma, which has immense temperature, and that is why indirectly we can say it is formed from fire. Obviously, आप लोगों ने volcanic eruptions भी देखे होंगे. It has immense temperature, and as a result, these rocks, they are formed when the magma cools and solidifies. जब मैग्मा ठंडा हो जाता है और सॉलिडिफाई हो जाता है तब ये इग्नियस रॉक फॉर्म होते हैं. और ये मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूं कि इग्नियस रॉक्स आर प्राइमरी रॉक्स बिकॉज दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, फ्रॉम मैग्मा एंड द लावा. अब इनको इनके टेक्सचर के बेसिस पर भी क्लासिफाई किया जाता है. अब कैसे क्लासिफाई किया जाता है ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में अभी बता दूंगा. नाउ जैसे कि these are formed from the molten magma and lava, obviously they cannot contain fossils. Fossils यानी कि dead plants and animals are not found in the igneous rocks. Why? Because it is formed from the molten magma
एंड लावा, ये वैसे भी एक लिक्विड स्टेट से ही सॉलिडिफाई एंड क्रिस्टलाइज होकर ये रॉक बनता है. सो देयर आर नो चांसेस दैट द फॉसिल्स आर गोइंग टू सर्वाइव. These are some of the examples of igneous rocks: granite, gabbro, basalt. All right, these are some of the examples of igneous rocks. मैंने आपको ये अभी पिछली स्लाइड में बोला था that I am going to tell you about the types of igneous rocks, how they are formed. So, depending upon the location where such lava or magma is cooled down, we can define these igneous rocks into two types. One is volcanic rocks, which are also known as extrusive rocks. The other one is plutonic rocks, which are known as intrusive rocks. इसको आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको इसको एक इमेज के रूप में एक्सप्लेन करता हूं. लेट मी एक्सप्लेन यू द डिफरेंस बिटवीन दीज टू विद द हेल्प ऑफ एन इमेज. But for now, you guys can remember the examples of extrusive rocks as pumice and basalt, and of plutonic rocks as gabbro and granite. All right. So here now the difference will become very easy to understand. यहाँ difference बहुत easily आपको समझ में आ जाएगा. मैग्मा जो molten form में होता है, जब वो अर्थ सरफेस के बाहर आ रहा होता है, उस टाइम पर अगर अर्थ सरफेस के अंदर ही वो कूल डाउन होकर सॉलिडिफाई हो जाएगा, देन इट विल बिकम इंट्रूसिव इग्नियस रॉक. और अगर वो अर्थ सरफेस के बाहर आकर फ्लो होगा और कूल डाउन हो जाएगा, देन इट विल बी टर्म्ड एज एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक. नाउ अगर वो अर्थ सरफेस के अंदर ठंडा होगा, इफ दीज रॉक्स विल कूल डाउन इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, they will have big grains, such as example is granite. अगर वो अर्थ सरफेस के अंदर ठंडे होंगे तो उस रॉक के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो बड़े बड़े होंगे. Whereas if it comes outside the earth surface and cools down, then it will cool down immediately. धरती के अंदर वैसे भी टेम्परेचर ज्यादा है. The temperature inside the earth is anyways high. So when it will cool down outside the earth's surface, it will cool down immediately, and hence it will be fine grained. ये fine grained rock होगा. Hope this makes sense. Now let us move to the second type of rock, which is sedimentary rock. You guys remember I told you I will tell you about what is weathering, what is erosion, what is deposition. So before we understand how these sedimentary rocks are formed, इससे पहले कि मैं आपको समझाऊं कि sedimentary rocks कैसे फॉर्म होते हैं, we must understand these terms: weathering, erosion and deposition. And there is one more term which is known as compaction and lithification. अब हम इस बात को समझते हैं. When the igneous rocks are formed, now there are various agents which will perform their functions. कई agents हैं जो अपना काम करेंगे, जैसे विंड, हवा तेजी से चलेगी, बारिश होगी, freezing will also take place, which will try to change the temperature of the rock. By these phenomena, what happens is the pre-existing rocks they break up. जो पहले से ही रॉक एग्जिस्ट कर रहे थे, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने सिर्फ इग्नियस रॉक्स डिस्कस किए हैं, सो लेट्स से इग्नियस रॉक, दे विल ब्रेक अप. Then with erosion, with wind erosion, with water erosion, what will happen is these broken up rocks will start moving. So now these two terms are cleared, which are weathering and erosion. और एक जगह से जब वो इरोड होंगे, एक जगह से जब वो बहेंगे, तब वो किसी और जगह पर जाकर डिपॉजिट हो जाएंगे. दे विल स्टार्ट डिपॉजिटिंग एट अ न्यू स्पॉट. और एक के ऊपर एक दे स्टार्ट फॉर्मिंग लेयर्स. एंड दिस इज हाउ the sedimentary rocks are formed. Remember, they are stratified. They are formed in terms of layer. सबसे पहले एक लेयर डिपॉजिट होगी, फिर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, और they will face pressure. इनको ऊपर से दबाव महसूस होगा because of the weight of the new layers which are formed, and later on they will become rocks. Now, this is also, sedimentary term is also derived from the Latin word which means sedimentum, which means settling. As I have already told you, they start settling in terms of layer. And I told you, they start settling in terms of deposition and lithification. Lithification में क्या होता है, जब ये एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर फॉर्म होते हैं, they start compacting and then they start cementing. They become rocks. And there are various agents which help in such kind of deposition
and weathering. These are water, wind, ice, and other living organisms. Now, as I told you about the previous rock, that is igneous rock, here they also could be coarse grained, fine grained, they could be soft also, they could be hard also. Now remember one thing, they are not primary rocks, they are secondary rocks which are formed from the pre-existing rocks. So remember one thing, as they are being brought down by winds, streams, glaciers and even animals, क्योंकि ये weathering erosion के द्वारा एक के ऊपर एक लेयर बनने से बने हैं, they can even contain animals, that means they can even contain fossils. So sedimentary rocks are the only rocks which can have fossils present in them between their layers. Hope this point is clear. And most of this earth's surface, almost 70% is constituted of the sedimentary rocks. Sandstone, limestone, shale, these are some of the examples of the sedimentary rocks. And I have already told you that they are different from other types of rocks because they are formed layer after the layer. ये एक layer के ऊपर दूसरी layer बनते हैं. That is why sedimentary rocks are also known as stratified rocks. Stratified means layer after layer ये form होते हैं. Hope this makes sense. Now, based upon how they are made, जिस तरीके से ये बनते हैं, we can again sub-classify the sedimentary rocks. Though it is not very important to know, but you guys must know an overview. अगर वो mechanical formation से बनते हैं, wind, erosion, all these things, and they are formed layer after layer, and due to the pressure of the above layers, ऊपर की layers के pressure के कारण अगर ये compact होकर रॉक में कन्वर्ट हो जाते हैं, दैट मीन्स दे आर मैकेनिकली फॉर्म्ड. ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड मतलब अगर ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे कि कोरल्स या सेलफिश के एक्यूमुलेशन से बनते हैं. केमिकली फॉर्म्ड या तो आप इसको लेबोरेटरी में प्रिपेयर करें या फिर अगर पानी में ऐसा कुछ डिपोजिशन हुआ है, इफ द डिपोजिशन हैज हैपेंड इन वाटर एंड द वाटर इवापोरेट्स एंड लेटर ऑन these minerals what are left behind they start solidifying, then also they can be formed. One thing, if you guys observe here, that limestone can be formed chemically also, it can be formed organically also, and it can be formed chemically also. Remember, we are not doing PhD, we are preparing for UPSC civil services examination. That is why I am going to teach you only those parameters which are important from the exams perspective. We don't have to do a complete graduation unless geography is your ऑप्शनल सब्जेक्ट. जब तक ज्योग्राफी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है, आपको बहुत ज्यादा डिटेल में जाकर हर एक एक टॉपिक पर पीएचडी करने की जरूरत नहीं है. Now let us try to understand about the third kind of rocks which are metamorphous rocks. आपको मैंने igneous rocks के बारे में बता दिया which are primary rocks. Now if I talk about sedimentary rocks or if I talk about these metamorphous rocks, these are secondary rocks क्योंकि ये igneous rocks से ही बनते हैं. Now metamorphous rocks are formed due to pre-existing rocks. इसका मतलब या तो ये igneous rocks का फॉर्म चेंज हो जाए तो बन जाएंगे, या फिर जो सेडिमेंट्री रॉक्स भी igneous rocks से बने हैं या तो उनमें ट्रेमेंडस चेंज आ जाए, उनमें प्रेशर और हीट के कारण they undergo a change in its form, then also metamorphous rocks can be formed. Obviously here also the same thing has been mentioned. यहां पर भी वही चीज दी हुई है कि जो metamorphosis का मतलब होता है, it means change of form. Meta means change and morph means change of form. बहुत ध्यान से इस बात को समझिए. जो pre-existing rocks है, when they undergo changes such as changes in temperature up to 200 degrees Celsius, इतना ज्यादा प्रेशर में चेंजेस आएगा. अंडर दीज कैरेक्टरिस्टिक्स these rocks undergo change and then they form metamorphous rocks, and they form 12% of the earth's surface. Granite, slate, marble, these are also some of the examples of the metamorphous rock. आपको अगर कोई डाउट हो रहा है, इस वीडियो के स्टार्टिंग में जाकर आप उस रॉक साइकिल की इमेज को देख सकते हैं और आप ये देखेंगे कि इग्नियस रॉक जो अर्थ से बाहर आया, दे कैन फॉर्म आइदर सेडिमेंट्री रॉक, और अगर वो किसी तरीके से दोबारा अर्थ के अंदर चला जाएगा, इट विल अंडरगो इमेंस temperature and pressure changes and it can get converted into metamorphous rocks. I hope this point is clear. Again, just how we have understood the classification
of the different kinds of rocks. Here also they could be foilated or non-foilated. जब बस आपको इसमें इतना ही याद रखना है, जब कोई स्पेसिफिक मिनरल प्रेजेंट होगा रॉक के फॉर्मेशन के टाइम पर, तब वो फॉइलेटेड हो जाएगा, मतलब उसमें थोड़ी सी आपको लाइंस दिख सकती हैं, and then they would be formed as foilated rocks. If they are not specifically having particular kind of mineral, या फिर उनमें उस टाइप का मिनरल प्रेजेंट होगा, और इफ दे विल हैव सच काइंड ऑफ मिनरल्स प्रेजेंट विच डू नॉट इलोंगेट, तब वो नॉन फॉइलेटेड रॉक्स बनाएगा. अगेन दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट from UPSC's point of view, but for GK's point of view, I have explained these things to you. All right. Now we will start solving a few questions which are important from UPSC's point of view. Now for quick revision, you guys can go to NCERT class 11. आप NCERT class 11 में जाकर chapter 5 को read कर सकते हैं. उसमें भी specifically you guys can read about rocks. GC Leong में भी part 1 के chapter 2 में आपको रॉक साइकिल के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. एटलस इज नॉट इंपॉर्टेंट इन दिस. लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग सम क्वेश्चंस. All right, so this is the first question. You can pause and then you can attempt this question. All right, so the right answer is option B. Obviously, अगर लावा कूल होके हार्ड होगा, then igneous rocks will be formed. All right, inside अगर immense heat and pressure के फॉर्म्स में रॉक नए रॉक्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, then this will be metamorphous rock. अगर मैग्मा अर्थ सरफेस के अंदर ही ट्रैप होकर कूल होकर सॉलिडिफाई हो जाएगा, then it will be intrusive igneous rocks. So the right option is when these sediments they deposit and then they start forming into rocks. This will be an example of or the process of formation of sedimentary rocks. This is the question number 2. You can pause the video and attempt the question. All right. So the answer is any type of rock. किस टाइप का रॉक मेटामॉर्फिस रॉक बन सकता है? वेल, इट कुड बी एनीथिंग, आइदर द इग्नियस रॉक और द सेडिमेंट्री रॉक. If both of them undergo the changes in terms of pressure and heat inside the earth's surface, they can completely change its form and it can get converted into metamorphous rock. तो कोई भी तरीके का रॉक metamorphous rock में convert हो सकता है. This is the next question. You guys can pause the video and write your answer. All right, so the right answer is solidification. Which process is necessary for the formation of igneous rock? Remember one thing, guys. Erosion, deposition, these things are related to sedimentary rocks. Metamorphism, ये तो metamorphous rock से related है. Solidification, जैसे ही molten magma या फिर लावा अर्थ सरफेस पर सॉलिडिफाई हो जाए, अर्थ के अंदर सॉलिडिफाई हो जाए, तब वो इग्नियस रॉक में कन्वर्ट होता है. सो सॉलिडिफिकेशन इज नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इग्नियस रॉक्स. This is the next question. You guys can pause the video and write your answer. All right, so the right answer is shale. But why the shale is right answer? Because you guys have to remember the examples also. Shale is an example of sedimentary rock. Now, sedimentary rocks are formed due to one layer formed on top of the other. Now, it is only in sedimentary rocks that there could be a presence of dead plants and animals. And it is only in sedimentary rocks where we can find fossils. And hence, shale is the right answer. I hope you guys have found this video helpful. Please do like this video. Once we will receive 500 likes, I will upload the next video. Please do share this with your friends. Now, why I'm asking this is because there is no fees for UPSC Digital Library. UPSC Digital Library की कोई फीस नहीं है, मगर आप जब इस वीडियो को लाइक करेंगे, इस वीडियो को शेयर करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमारा चैनल ऑटोमेटिकली उन लोगों के सामने आना शुरू हो जाएगा जो लोग फीस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं और YouTube पर सर्च करके पढ़ाई करते हैं. And hence we will be able to help maximum people. You can also get connected to us on Facebook and Instagram. Thank you everybody for watching. God bless you.